Assalamu alaikum, dear online students. Do let me know if you can hear my voice and see the screen at the same time. Nafis, could you please confirm it, beta? All right. So, sir, here on page number. Yes, this is the one. Okay, we're going to launch our vocabulary with this one. So today we'll try to finish off a series. It's a big series. It has more than 30 words, but we're going to target this. So just take a quick look. All the A series words that you can see on the screen. How many of these you know already? How many of the A series words do you already know? First one, what is that? Help in. Sorry. Okay, but okay, theek. This is, I will consider this as half of the meaning, right? What else? Adore, we understand it is the intense degree of love, a higher degree of love. What else? Arena. Arena is a restaurant. No, arena is a place where you showcase your talent, basically. Stadium, Colosseum. All right, so I want you to note down these words, and any words that you already know, you can skip those. But firstly, on the left, open up your register, divide your page into two halves, right? One for the words and then for the meanings. These are the synonyms. These are the words given specifically in the list of ICAP. Okay, fold the page in half, and you will have two columns already. This is PDF is 230, 226. Yeah. If you have the hard copy with you, just write the meaning in front of the words. That's fine. Right? 226. So 100 sections one. Yeah. 226. Should we begin? All right. So the first word is abet, which means to support or help someone, but in something negative, in something bad. So aiding and abetting a criminal is the whole thing. So if someone is going for Hajj or Umrah, you're not helping them, you're not aiding them, you're not abetting them, you're simply supporting them. But if someone is trying to commit a robbery or kill someone and you're helping that person, that is called abetting, a legal word. Aiding and abetting. Abet is written there, right? So aiding and abetting. So abet is the word which means to support someone in something negative. Next one is abeyance. Abeyance means to suspend something. It means suspension. It is a noun in nature. Abeyance, for example, who is aware that every year we have a new tax law? That is called income tax ordinance, and every time the budget comes, there are new rules that come into play, right? So every time there is a new rule, the old one is put into abeyance. They put that rule, the old one, into pending. Obsolete. Obsolete is an adjective. To put something in obsolete state is abeyance. So, for example, we are using PRC, right? AFC system, yaad hai? So that is now in abeyance. That has been repealed, that has been terminated, or it is not practiced anymore. Right? That's the meaning of abeyance, to put something in suspension. Okay, then we have abject. Abject is poor, dilapidated conditions. Pakistan is living in abject conditions, poor, moneyless, penniless, bankrupt, hopeless, despair. Yeah, that's fine. So bad conditions altogether. Pakistan is facing abject conditions right now. Yeah. So next one we have accolade. Accolade is synonym of award, certificate, title. Yes, title is fine. So if you perform everything nicely, life will bless you with many accolades. It's again a noun, right? Award, certificate, a title, a reward that is given to you, that is bestowed upon you, right?
So next up we have adamant. Is there any marble fan in? Kaun sa miss hua? Accord. All right. So accord means agreement. Accord means a treaty. Accord means an understanding, a mutual understanding. So we have an accord with India over Indus River, right? Which is called Indus Treaty, right? Who's a Marvel fan? Yeah. So we have in Civil War, we were introduced with a concept called Sokovia Accords, if you remember that. Yeah. So again, Marvel fan, what is the material used to make Wolverine's claws? Adamantium, and that way you can remember adamant. Adamant is something which is unshakable, unbreakable. So a lot of times, you know, our grandparents and our parents become adamant about something, and it is very difficult to convince them otherwise. Immovable, unshakable, someone that cannot be budged, someone who cannot be persuaded to do something else. Bhai, maine bol diya to bol diya, khatam ho gayi baat. Rigid or stubborn, yes. Persistence is kind of a positive word. This one somewhere is neutral, right? So don't be adamant. There is always room for change. Changing is life. Then we have adept. Adept is expert, someone who's proficient, someone who's learned, someone who's skilled. Yeah, skillful is fine. If you have more synonyms, throw them my way. It's okay. It's fine. Professional is fine. Yeah, that's fine. So adept. Then we have adhere. Adhere, we should adhere to the principles of Islam. We should adhere to our values. We should adhere to the teachings of our parents. So adhere means to follow, to stick with something, right? Adhere. Adhere is to follow. Abet and abeyance. Abet is to support someone in something negative, and abeyance is to put something in suspension. To support someone in something negative and to put someone or something in suspension. Right. So then we have adjuvant. Adjuvant is a person who's very kind and helpful. So Abdul Sattar Idi is highly adjuvant, is a very adjuvant person. Supportive and kind. Supportive, kind, helpful. Can be considered like that. Done? Should we proceed further? Okay, then we have admonish. Admonish and admonition is the same word. One is the adverb, the other one is a noun. Admonish is scold or an advice with a hint of criticism or warning. Yes. So see, your mom says, beta do this, do that, but your dad says, bhai kar loge to achhi baat hai, nahi karoge to tumhari apni marzi. That is admonition. With a little bit of criticism or judgment or warning. Advice with all of these things. मतलब सिर्फ advice नहीं है, उसमें थोड़ा सा ना वो एक X factor भी डाल के दे रहे हैं पापा. सही है. So admonition, sir. Then we have adolescent. You guys are, yes, you guys are adolescents, teenagers, youthful, young people, right? It's the same word. Admonish is a word, admonition is the noun. So next up we have adore. So we like someone, but we love certain individuals, right? We love everyone, but we adore our mothers. So adore is a higher degree of love. So like se love pe, love se adore pe. Sorry? Adolescent means a teenager. Youthful, young. Not juvenile, not juvenile. ठीक है. अच्छा जी, इसके बाद आते हैं adroit हो गया जी. Adroit नहीं हुआ. Adroit का मतलब है again adept से connect करेंगे इसको. Adept क्या था? तो इसके लिए एक और वर्ड आ गया हमारे पास,
adroit. Adroit is again expert. इस तरह के 5 words आएंगे हमारे पास, ठीक है? एक 2 C series में निकलेंगे, एक P series में निकलेगा, ऐसे ना, मतलब अलग-अलग जगह पे. So we have adroit, again skillful and expert, right? After you qualify your chartered accountancy, you will be adroit in financial matters. Yeah. Yes. So then we have adulterate. Now the best trick to remember this word. Who understands the meaning of adultery? Meaning? Say that, madam. Okay, so all right, fine. That's the word. So adultery means to commit fornication, the better word, fornication without getting married to someone, right? So if you commit adultery, what happens to your faith? It is one of the grave sins. It is one of the gunah kabira, right? So if you commit that, your faith, your iman gets totally destroyed. It gets adulterated, it gets contaminated. So adulterated means contaminated, right? Contaminated, polluted, or destroyed, simply. Contaminated, if water gets contaminated, can you drink that? Definitely not. If you contaminate a whole truck of water with 1 drop of urine, can you drink that? Definitely not, sir. It is polluted now. So contamination is adulteration. So then we have affix. Affix means to attach, to fix something. So in order to send this letter to the right address, you have to affix a stamp on it. Yeah? So to attach. Affluent is someone who's rich and powerful. To attach. Affix. Sorry, affluent is someone who's rich, powerful, influential, jiski chalti hai, right? Kind of that, but mafia holds a very, mysterious and they live in the shadows. They operate in the shadows. So someone who's out there in the open, right? Someone who's a public figure and jinki baat bhi mani jaye. So kind of like the rulers, the ruling class basically. Shahid Afridi is an affluent person, उनकी लोग सुनते हैं. Imran Khan is an affluent person, उनको follow किया जाता है, right? So affluent के बाद आता है जी aggravate. Aggravate का antonym लिखिएगा पहले. Aggravate बनता है mitigate. Aggravate, opposite is mitigate, right? M-I-T-I-G-A-T-E, mitigate. So when you're trying to mitigate a situation, you're trying to make it better. But when you're trying to aggravate a situation, you're trying to make it worse. So if there is a fire and you put water on it, you're trying to mitigate the fire. But if there is a fire and you're trying to put petrol on it, you're trying to aggravate it. You're trying to make it aggravate. Try to use that word, right? You're trying to make it aggravate. You're making it aggravated. So suppose you're getting scolded by your parents and some Masi or Pupu comes along the way and it's hey yes, that is aggravating the situation, right? Sir, akin is related, linked, similar. So your situation is very much akin to mine. Aggravate, to make something worse. See, Pakistan has a huge deficit. Right, everyone, हमारे revenues बहुत कम है sir, tax के मामले में हम बहुत कम कमाते हैं, लेकिन हमारे expenditures बहुत ज़्यादा हैं. We all know that. And the floods have made it aggravated. They have aggravated the financial economy, the situation of Pakistan. और खराब कर दिया, बिल्कुल सही है. To make things worse. So right after that, we have akin means similar. See, we all live in Karachi. We all are Pakistanis, so our situation is very much akin to each other. Idiom mein agar bole, someone is talking. Guys, so agar idioms mein bole, to hum kehte hain ji, we are sailing in the same boat. Hum ek hi kashti ke musafir hain. Right? So our situation is very much similar. So imagine in a universe, Tuba is like me and I'm like Tuba, right?
Relatable, linked, exactly. Then we have alleviate. Alleviate means to make the situation better. It can be connected somehow with aggravate as an antonym. Why are you getting your studies? Why are you trying to become a chartered accountant? Because you want to alleviate your situation. You want to alleviate your social and financial position. Yeah? बिल्कुल. Mitigate मामला खराब है उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं. ये improvement की तरफ है. सही जी. Alleviate के बाद आता है alter. We should know the meaning. To change, to modify, to upgrade. We alter our cars, we alter our bikes, we alter our dresses and clothes. Altercation, on the other hand, is a dispute. It's a fight. Yeah? Sorry? No, it's a noun, modifies a verb. Altercation. अच्छा, alter की बात करें. Alter में हो सकता है, modify. बिल्कुल सही है. Sir, altercation, Pakistan and India have had 3 or 4 altercations. Yeah, 1965, 1971, we have Kargil, and ultimately we've had like थोड़े बहुत झगड़े तो हमेशा ही होते रहते हैं हमारे. So altercation is a fight, a dispute. Yes, argument. So ambiguous is something which is not clear, which is vague. No, which is not clear. For example, if I tell you go in that room, which room, when, at what time, with what things, right? So my instructions here are ambiguous. They're not clear. Yeah. So when a teacher comes and say work hard, what does that mean? That can mean a lot of things. So एक ऐसी बात जिसके बहुत सारे meanings निकल सकते हैं. ठीक है? Crypto legal है या नहीं है? ये जो आया ना चेहरे पे confusion, ये जो confusion आया सर हमारे पास, that is ambiguous, right? We are not clear. Idioms में बोलते हैं जी black and white का मतलब बता, give this to me in black and white. क्या? In clear terms, clear writing, सही है. तो gray area क्या होता है? जो clear ना हो, that's the same thing. Ambiguous is putting something in gray area. गया चलो बाद में देखते हैं इसको. Pakistan was put into FATF's grey list. वो भी कह रहे हैं चलो पाकिस्तान को बाद में देखेंगे, अभी रुक जाओ. सही है. अच्छा जी, ambiguous के बाद होता है ambush. Say that again. Surprise attack, waiting for someone, for trapping them. You know, आप किसी के लिए घात लगा के बैठे हैं कि आएगा तो बैंड बजाएंगे हम. You know, ऐसा कुछ. A surprise attack basically. Sir, amicable क्या? Someone who has a good nature, friendly, kind, all the good things that you can imagine about a person. So who is the most amicable person that you have ever met? Other than your family, your mom? Who's the most amicable teacher so far? Well, I guess everyone would be trying to be amicable right now. You said Sir Shahzad Baraja? Thank you so much for that. You can be a good politician in the future. All right. After amicable, we have amnesty. Amnesty is forgiveness. Amnesty is pardon. Amnesty is official pardon and official forgiveness. You know, जो president साहब आके माफ करते हैं कि चलो इसको छोड़ दो, इसने गलती से मारा बंदे को. That is called amnesty. All right, जी. Amnesty. Amplify, to increase, to enlarge, to augment, to boost. So who knows about the antibiotic augmentin? Yeah, who has had the worst reaction of augmentin, sorry. मतलब usually ये होता है कि मेरे साथ ये हुआ कि जब भी मैंने augmentin खाई है तो मेरी तबीयत ज़्यादा खराब हुई है. मतलब it doesn't suit with a lot of people. उसके side effects ज़्यादा हैं. So try to remember augment with augmentin, right? Augment, sir, augment कहाँ चले गए हम? Amplify था. Amplify के बाद आता है जी anarchy. What does that mean? Chaos, lawlessness, absence of absolute power. So who's the most powerful person in Pakistan? Or who's the most powerful entity in Pakistan?
Army, yes. If there is no army, if there is no government, it will be chaotic. There will be anarchy all over the place. There will be no single ruler, and everyone would be a ruler. Do you understand the importance of this sentence? कि ruler कोई भी नहीं होगा और सभी rule कर रहे होंगे. When everyone is a ruler, there is no rule. There is anarchy. Animation किसको कहते हैं जी? Sorry? आप क्या कह रहे? That's the basic common meaning. Cartoons, no, we're not looking for that. Animation is being alive. Animation is alive, high spirited. कह सकते हैं. देखो इसको यूं याद रखो कि ग्रामर में कॉन्सेप्ट होता है animated nouns which are living things. Inanimate nouns are non-living things. So this chair is inanimate. It's an inanimate object, right? But you are animate, right? So इसको अगर थोड़ा और गहरा जाके देखें तो animated का मतलब to be in high spirits, to be happy, to be, you know, life will throw you many challenges. You have to be animated. You have to keep your chin high. You have to look tall, right? Alright जी, इसके बाद आता है हमारे पास क्या? Portion is to allocate. किनके घर में बजट बनता है भाई? इतने पैसे सेविंग में जाएंगे, इतने पैसे प्लॉट की पेमेंट में जाएंगे, इतने पैसे जो है वो इम्तियाज जाएंगे. That is a portioning, right? That is budgeting. That is allocating the resources properly. किसी के घर में ऐसा होता है कि जितने भी पैसे हैं सारे उड़ा देंगे हम. Sir, if you're practicing that, please, you know, you're going to be chartered accountants real soon. You're going to be students of you are students of chartered accountancy now. जहाँ यहाँ से जो चीजें सीखेंगे ना अपनी फाइनेंशियल टर्म्स में वो अपने घर पे अप्लाई करना शुरू कीजिएगा थोड़ी थोड़ी. You know, it will take you out of a lot of troubles. It will save you from a lot of troubles. Then sir, apprehend is to, ठीक है, एक और मतलब होता arrest. Sir, arrest भी लेना बिल्कुल. Sir, Nawazri was apprehended at the airport in 1999, right? He was apprehended one more time, you know, and then one more time. So apprehended, sir. Apprise किसको कहते हैं बच्चों? No, that's value something. नहीं, वो भी appraisal है, वो appraisal है. Sir, this means to inform. Yes. This means to notify. I wish to apprise my senior authorities. Right? Sir, appropriate, certain, allocate, again, इसको करेंगे portion के साथ link. अच्छा, when a word is linked, it means there are not two words, it's a single word now. उसको link जितने बनाएंगे, words उतने ज़्यादा कम होते जाएंगे. Relevant भी कह सकते हैं. Let me just say that when you use appropriate for relevant, it means adjective. Give appropriate response at the appropriate time. सही time पे सही बात बोलो, बिल्कुल सही है, वो adjective है. But I want to appropriate this money for this purpose. हमने allocate वाले sense में ये verb use करना है. सही है? चलें जी, A series वो खत्म होने वाली है सर. सर archives किनको कहते हैं? Files, records और storage. Arena we all know. Stadium, एक और word लिखो, Colosseum किसको पता? What's the meaning? Yeah, say that. So Roman Colosseum, Romans वहाँ पे ना लोगों को gladiators को लड़ाया करते थे. To have fun, yeah, to entertain. So it was a match till death. Apprise फिर से आते हैं बेटा, end पे आते हैं अभी. अच्छा जी, arena क्या है जी? Arena हो गया. Ascent is to go up or go down. To rise, sir. बिल्कुल. So you want to apprise in life. That is why you want to do chartered accountancy. Sir, when I die, I want to apprise or ascend to heaven, not descend into hell. Yeah. So listen to the question. Listen to the statement again. When we die, we want to ascend to heaven, not descend to hell. Yeah. So we want to ascend. ASCENT is a noun. If you end it with a D, it's a verb. Yeah, this one is a noun. Assessment, evaluation or examination, judgment or एक ही बात होगी ना वो तो.
और ग्रो भी कह सकते हैं, और असेंडिंग ऑर्डर से याद रखो बस उसको। जी सर, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो आप मिस कर रहे हैं, आपका ब्रेड एंड बटर, आपकी आगे चल के रोजी रोटी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, डू यू हैव एन आइडिया? Audit, sir, exactly. Audit. So audit is assessment of financial resources or financial performance. Sir, assurance आप audit के बाद देते हैं, assessment के बाद देते हैं, हाँ जी ठीक है, guarantee, right? Guarantee. Assurance report क्या देती है? Guarantee देती है कि हाँ भाई सही है, या at least disclose कर देती है कि ये weakness है आपके पास. Information, affirmation is also fine. Atrocity. Yes, atrocity is cruelty, simple. Yeah, atrocity is cruelty. Monstrosity एक word लिख लें अपने पास, इसी का थोड़ा सा और खतरनाक वर्जन. मतलब when you commit atrocities, you turn into a monster and it's a monstrosity now. See, a human, what I'm trying to say, a human is not capable of committing a heinous crime like rape, right? In order to commit that, you have to turn into a monster. Yes or no? So atrocity is barbarism, it is harshness, it is cruelty. In the side notes, you can somewhere write it down. Har zulm tera yaad hai, bhula to nahi hu. You know, Sajad Ali's song. Yeah, in order to remember it. So then we have audit. हो गया. किसके साथ कनेक्ट करेंगे? Assessment के साथ. Sir, augment किसके साथ कनेक्ट करेंगे? Augment बोला ना अभी हम लोगों ने. एक वर्ड आया था पीछे, amplify. Amplify के साथ कनेक्ट कर लें, ascent के साथ कनेक्ट कर लें. तो ये 3-4 वर्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. Right? सर, ऑटोक्रेटिक कौन होता है? जो सबकी सुने या सिर्फ अपनी चला है? सर, ऑटोक्रेटिक इज एक्चुअली अ डिक्टेटर. ही इज अ रूलर हु रूल्स विद आयरन फिस्ट. सर ये कहता है, इसको किसी और कनेक्ट करेंगे? एडमेंट के साथ कर सकते हैं? कैन वी कनेक्टेड विद एडमेंट? क्या था एडमेंट? जो सबकी सुनता है या अनब्रेकेबल? सर ये एडमेंट आ गया यहाँ पर. सर, ऑटोनोमस एंड ऑटोनॉमी इज द सेम. इंडिपेंडेंट कौन सा इसमें से? सर, इंडिपेंडेंट किसके सामने लिखूं मैं? ऑटोनोमस के सामने, ऑटोनॉमी के सामने? ऑटोनोमस के सामने. सो इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस आर बोथ adjectives. Autonomy and independence and freedom and sovereignty are all nouns. And independence, the sentence use करना ना तो फिर मतलब change हो जाएगा. तो for example, I have the autonomy and I want to be autonomous. I want to be autonomy नहीं कहेंगे ना हम लोग. Sovereign and sovereignty, मतलब जिसका adjective बना रहे हो उसकी noun भी बनाओ साथ में. फिर लिबर्टी का नाउन एडजेक्टिव क्या होगा? क्या? लिबरेट वर्ब है, लिबरेटेड हो जाएगा सर. ये सही है. वी आर लिबरेटेड पीपल. ऑलराइट सर, देन वी हैव एबिलिटी. एबिलिटी इज मोर लाइक सॉरी ईगरनेस, पैशन. यस, zeal is fine. Alright, so सर हमने देखना था एक और वर्ड जो हमारा मिस हुआ था. ऑनलाइन स्टूडेंट ने कहा था कि जी इसको रिवाइज करते हैं. वो क्या था? जी. Keen interest and enthusiasm is ability, and the word that we were supposed to do, prize. What's the meaning of a prize, guys? A prize is inform or tell, notify, let someone know, advise, brief, intimate someone. नहीं आ रहा. It's not even given in the Google meaning. Yes, not there. All right. हाँ, वो uprise है. Yes, वो uprise है. वो उसके बीच में एक space भी होगा. Yes.
A series, man. We're doing A series. All right. To notify, to inform. All right, guys. Take a look at this one. I want you to notify. Sorry, I want you to note. All right, I want you to note all the words. अगर किसी का कुछ रह गया भाई तो वो यहाँ से देके complete करो जल्दी से, and I'm giving you another surprise. What 3 more words? Say them. Okay, archaeology. Yes, यहाँ पे उनका meaning है. Archaeology is the science of fossils and ancient things. What's the next word? Arbiter is a judge, a third party who decides, and arbitrary is random. ऐसे ही कर रहे हैं हम लोग तब से यार. नहीं, अभी नहीं. क्या रूल होता है इसका पीडीएफ का? Once we are done with A to Z, जब ये एक लिस्ट है अभी तक जिसमें से हम A to Z जाएंगे, when we are done with that, you'll get the PDF. तब तक take your pictures, note it down, whatever is missing. अच्छा क्यों मैं लिखवा दूं ना आपसे? I want you to have this thing in your muscle memory as well. कोई चीज सुना ना, कोई चीज लिखते हैं तो वो थोड़ा अच्छा याद हो जाता है. That's why I'm asking you to write it down. अच्छा एक और तरीका भी हम लोग इसके साथ यूज करेंगे. पहले ये देखने कि कोई वर्ड छुटा तो नहीं है आपसे. कोई वर्ड अगर मिस हो गया तो उसके मीनिंग लिख लें. इग्नोर करते हैं जुवेनाइल. मुझे पर्सनली लगता है मैंने ऐड किया था ये, तो अब I think juvenile is a negative word. Adolescent is a positive, मतलब वो आपकी quality बताता है. Juvenile बचकाना. Yeah, so don't include that here. हाँ, true. So you've made a juvenile mistake. तुमने बहुत ही बचकाना बात की है, बहुत ही बचकाना गलती की है. So it can be used as a negative statement as well. Here, being adolescent means being young. It's a quality. All right. Sir, any word that you have missed, please note it down. Make way for Prince Charlie. Okay, we'll solve 30 MCQs every day for this one. In every class, that is. Gee, any words that is missing? Sure, I can. All good? All right. So one 72920. All right, everyone, answer these questions, please. What is the meaning of orthographic A, B, C, or D? A chord? You can open up your registers and take a look for now. Tomorrow you won't have that choice. Tomorrow you won't have that liberty. A. All right. So if you find any new meaning of the word, please add it to your list. That's why the registers are open.
right? If you find any new meaning, any new word that is not familiar to you, write it down then and there. All right, so adore. What's the meaning of this one? What's the word? Zoom करते हैं. Better? What's the meaning? To boost. Okay, if it's an MCQ, it's fine. But if it is a word like this, if it's a question like this, you'd have to tell me the meaning as well. All right. So amicable means add it to your list, please. Cordial. Cordial. We cordially invite you to the wedding ceremony. Cordial means amicable, friendly. Audit. इसमें assessment नहीं है मेरे भाई. Third. Admonish. Add it to your list. Warning is another word for caution, right? What's the meaning of caution? To warn someone. I caution you, he's not the right friend. He's not the friend that you want. Warning. All right. Autocratic, once again, sir. Add it to your list. If it is not added already. Why do you have your phone? Okay, all right. Why don't you sit here in the front row? नजर नहीं आ रहा लेकिन मैं बैठूंगा पीछे. क्या सेंस है यार? आ जाओ आगे, कोई मसला नहीं है. Sit in the second row if you want. देखो कभी कभी क्या होता है, फ्रंट रो में बैठने से ना वर्ड्स एकदम आप ऊपर आके गिर जाते हैं, होता है ऐसा. तो सेकंड रो में बैठा करो प्लीज. सही है यार? अगर आपको भी नहीं दिख रहा है तो नेक्स्ट क्लास से सेकंड मतलब आगे बैठिएगा. सही है? ऑल्टरकेशन. सर ये ऐड कर लें स्क्वाबल को अपनी लिस्ट में. देखो अचानक दुनिया बेहतर हो गई ना, सब कुछ नजर आने लग गया. राइट, स्क्वाबल. डन सर. अप्रोप्रिएट. स्क्वाबल का मतलब ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन का मतलब फाइट, अ डिस्प्यूट, आर्ग्यूमेंट. लिख लें अपने पास. ईयरमार्क करना क्या कहते हैं जी? टू फिक्स सम सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. भाई ये जो पैसे ना, इससे मैंने गाड़ी खरीदनी है, इसको मैं नहीं छेड़ूंगा. सही है? या ये वाले जो पैसे हैं ये मैंने खाला को देने हैं, बीसी डाली हुई है, इसको मैं नहीं छेड़ूंगा. या how many people still have the practice of committee and BC at home? I mean, करते हैं. हाथ उठाओ ना फिर यार. 1 2 3 4 5 6 7. Now as a financial student, as a student of chartered accountancy, everyone, sir, हम थोड़ी देर के लिए religious sentiments को साइड पे कर रहे हैं. Sir, do you understand economics के एक principle होता है time value of money. यानी आज जो लाख रुपए हैं, एक साल बाद वो लाख रुपए उससे ज्यादा होंगे, कम होंगे? कम हो जाएंगे. तो कमेटी वाली आंटी जो है वो क्या करती हैं, हमसे आज के पैसे लेके हमें साल बाद या 4 साल बाद एक अमाउंट देती हैं. तो उसकी वैल्यू बढ़ चुकी होती है, कम हो चुकी होती है? कम हो चुकी होती है. सर उस वैल्यू को रिप्लेस करने के लिए हम एक चीज लेके आते हैं जिसको कहते हैं इंटरेस्ट या प्रॉफिट, राइट? तो अगर वो इंटरेस्ट और प्रॉफिट आ जाता है, इसका मतलब पैसा जो कम हो रहा है बैठे बैठे वहीं पे, वो बराबर रहता है. ज्यादा नहीं जाता लेकिन बराबर रहता है, राइट? तो if 10% is inflation and 10% is the profit rate, तो हमारा वो जो पैसा है वो इक्वल हो रहा है सर, राइट? 90% इन्फ्लेशन की वजह से और वापस से 10% हम बराबर आ गए. तो डू यू थिंक कमेटी और बीसी इज अ बेटर ऑप्शन फॉर सेविंग? इज इट अ बेटर सेविंग व्हीकल? इज इट अ बेटर सेविंग ऑप्शन? क्योंकि वो अल्टीमेटली तो आपके पैसे की वैल्यू खराब ही कर रहा है. आपको कुछ ऊपर एंड अबव मिलता है उसके? नहीं मिलता सर. सो start talking these things, start discussing these things with your parents, because now you're a student of chartered accountancy, right? वो थोड़ा सा resist करेंगे लेकिन कभी हो सकता है मान भी जाए. जब आप उस पोजीशन पे आएंगे तो आपके पास एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी.
इसको sorry here again I told you that we are keeping that aside, we are keeping the religious sentiments of the aside. आगे जी सर मुझे बता दें सर, रोमा लिखे, रोमा का मतलब ऐड करें, नहीं रोमा नहीं है, एम्बुश है सर, एम्बुश का मतलब बताएं, लिखा हुआ आपने, सरप्राइज अटैक, बिल्कुल सही है, एग्रीवेट सर। और इस केस में ना जब इंटरेस्ट वाली बात आ जाती है तो देन वी कैन rather than putting up committee we can buy gold with that, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू अप्रिशिएट होती है। तो और भी ऑप्शंस है यार, कमेटी केस से बेहतर और भी ऑप्शंस हैं जी। एग्रीवेट सर, सॉरी बी नाउ वर्ड्स यही कह रहे थे आप, सॉरी सॉरी यार। अरे जी मुझे बता दें सर इसमें से कौन सा वर्ड है और इसका मतलब बता दें। मेरी जान ये जूम का मसला पता है, अच्छा ये उस वो बेकार है, वर्ड याद रखो, एफ्लुएंट वर्ड याद रखो बस। हाँ जी सर, वर्ड का मतलब क्या, रिच, पावरफुल, और 3 वर्ड देने आपने मुझे इसके, सही है। चलें जी, एमनेस्टी के 3 वर्ड देते हैं जल्दी सर। पार्डन, फॉरगिवनेस, मर्सी, मर्सी लिख लें एक एक्स्ट्रा वर्ड। ऑटोनमस, ABCD, सी। ऑनलाइन वाले बच्चों आप भी पार्टिसिपेट करो भाई, आपने पैसे दिए। एफेक्ट्स, टू अटैच, किधर है, ए, लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स एडेड टू वर्ड्स, सही है जी। अब देखिए इसको हम कहते हैं कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग, राइट, उस सिचुएशन में उसका क्या मतलब है। ऑटोनॉमी, self sufficiency, sir if you want to add this please add to your list। adolescent, देखें आ गया जुवेनाइल यहाँ पे। सो जुवेनाइल मेरी एक ओपिनियन थी, वेबसाइट उसको नहीं मान रही है, सही है, यू कैन ऐड इट, यू कैन यूज इट। सर आर्कियोलॉजी के 3 वर्ड्स देना मुझे, एक ही दे दें चले। इट्स अ स्टडी ऑफ फॉसिल, ठीक है जी, फॉसिल्स और हिस्ट्री, ठीक है। अरीना की एग्जांपल, that's good, so 2 rounds are done, last round is upon us again। comparable, भाई देखिए आई कैप में भी ना आगे पहले 10 क्वेश्चंस में आपने यही करना, ठीक है, यही करते रहेंगे, आंसर्स मिलते रहेंगे, मार्क्स मिलते रहेंगे, बाद में लिखेंगे, राइटिंग वाइटिंग बाद में होगी। चले आर्बिट्ररी सर ये इसका मतलब है, इसका मतलब होता है रैंडम, अनप्रिडिक्टेबल, सही है। फॉर एग्जाम्पल देखें ऑडिट फर्म में जाने की कंडीशन क्या, कैफ कंप्लीट करना, लेकिन 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 मैं एक ऑडिट फर्म का पार्टनर हूं और मैं कहता हूं यार वो जो बंदा रहा वो मेरे मामू का बेटा है या मेरे दोस्त का बेटा है या कोई भी है, मैं उसको उठा के रख लूं, वो इट्स नॉट नाउ इन ऑर्डर, ये मेरी अपनी रैंडम विश के ऊपर है, राइट, दैट इज आर्बिट्ररी। प्रेफरेंस नहीं, आउट ऑफ द रूल, एक्सेप्शन की तरह, बेस्ड ऑन सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल डिस्क्रेशन और प्रेफरेंस रादर देन द ऑफिशियल रूल। जी एनिमेशन, are you asking or telling? Telling, that's the wrong answer। D, आवाज आई जी, D, D is fine। विगर ऐड कर लें जी, विगर कहते हैं पावर को, वाइटलिटी कहते हैं जिंदगी को, जान को। if your vitals are okay it means that you're healthy, right? alter, A, ठीक हो गया जी। सर असेसमेंट, डी, ये ठीक है जी। एप्रहेंड, एड इट टू योर लिस्ट प्लीज। अंडरस्टैंड किसी ने बोला था, याद है?
So understand is the correct meaning. Grasp is also grasping the meaning of something is fine. Adulterate, sir. Impure is fine. Admonition. So what is a rebuke? वही वो वाली नसीहत जिसमें एक वार्निंग शामिल है, ठीक है? Altercation. Argument. Sir, assent. Yes, sir. बिल्कुल सही है. Challenge. Sir, that concludes round number 3, and that brings us to our next portion of the class, which is going to be grammar. Right? मैं एकदम यार तुम लोग को राइटिंग पे लेके नहीं जाऊंगा इनिशियली, ठीक है जी? हम शुरू में कुछ टाइम ग्रामर को देंगे, कुछ टॉपिक्स ग्रामर के करेंगे, भले तुम लोग को अच्छा लगे या बुरा लगे, आई विल हैव टू डू दैट. सही है. सर मुझे सबसे पहले बताएं, व्हाट डू यू नो अबाउट अ वर्ब? व्हाट इज अ वर्ब? Hold that thought. That's the right answer actually. जी सर, अवाम कहती है एक्शन. So sir, I teach English. Where's the action? Sir, it means that the sentence has the verb, right? बिल्कुल सही है जी. सर अगर मैं बोलूं I am a teacher, so where is the verb now? Where is the action now? Action कहां से action है भाई? वो am कहां से action है? टीचर एक नाउन, एक प्रोफेशन का नाम है. I is a pronoun, sir. भाई एक्शन नहीं है इस सेंटेंस में, एक्शन नहीं है. और सर किसी भी जुबान में आप चले जाना, छोटे से छोटा सेंटेंस होगा ना, उसको भी हम क्या बोलेंगे सर? सेंटेंस की कंडीशन पे उतरने के लिए इट हैज टू हैव अ वर्ब. सर उसके अंदर वर्ब नहीं होगी, वो सेंटेंस कभी भी नहीं बन पाएगा. ठीक है जी. उसका फुल मीनिंग बाद में. हम अभी बात करें ग्रामेटिकली, हम कॉन्सेप्चुअल बात नहीं भी कर रहे. ग्रामेटिकली इट नीड्स टू हैव अ वर्ब. वर्ब के बगैर वो सेंटेंस नहीं बन पाएगा. सर सिट itself is a single word, लेकिन एक imperative sentence है because it has a verb in it. तो भाई हमारी पहली गलती ये कि verb is not just an action, verb is an action or a state. Note it down please. So state means verbs that show no action. Sorry? Yeah. लेकिन उससे भी बढ़ के देखिए सर, मैं अगर बोलूं आई बिलोंग टू पाकिस्तान, एक्शन है इसमें. सर इंग्लिश अल्फाबेट्स कंटेन्स कितने? 26 लेटर्स. एक्शन है? एक्शन है? राइट नाउ इट्स नॉट एन एक्शन. सर आप बोलें जी, ट्रांसलेट करें सेंटेंस को, मुझे अल्लाह पर यकीन है. डू वी हैव एन एक्शन इन द सेंटेंस? भाई देखो, आई एम मूविंग माई हैंड्स एंड आई बिलीव इन अल्लाह. वेयर इज द एक्शन? डू यू सी एनीथिंग हैपनिंग? डू यू सी एनीथिंग मूविंग? तो मेरी जान यही तो कह रहा हूं, ये स्टेट है, ये एक्शन नहीं है. ठीक है जी. सर आई ओन द प्रॉपर्टी, एक्शन है? स्टेट है सर. सही है, आई ओन द प्रॉपर्टी. और क्या हो सकता है सर? आई एम हैप्पी, एक्शन है? नहीं सर. एंड आई हैव अ कार, एक्शन है? नहीं सर. तो इस तरह की और बहुत सारी वर्ब्स होती हैं जिनको हम स्टेट वर्ब्स कहते हैं. ठीक है. इनमें जो सबसे खतरनाक होती हैं सर, वो है ये सर. क्यों खतरनाक है? क्योंकि इनका एक और नाम भी है सर, हम इसको कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब. So why do we call them primary auxiliary verb? Because these two things, in fact these three verbs which we are going to add later on, these can work as a main verb as well as a helping verb, right? For example, sir, I am teaching. Where's the main verb?
Teaching. And where's the helping verb? Am. So, but right now I am happy. Where's the main verb? Am is there. Happy is an adjective, sir. चलें आसान करते हैं. I am a professor. Right? So professor is a noun जिसकी गवाही आर्टिकल भी दे रहा है क्योंकि आर्टिकल नाउन से पहले आता है सर. और ये जो है ये क्या बन गया? Verb. Is it a helping verb? Sir, helping verb होने के लिए कोई और main verb भी तो हो. So this is now a main verb, sir. Main state verb. So here, am is a helping verb and the tense is present simple, present continuous. So present. So here the tense is present simple or present indefinite. Why are we calling it present indefinite? Because देखिए इसमें first form of verb आ रही है, right? तो भाई primary auxiliary verb क्या है? A verb which can take two roles, which can play two roles or which can take two shapes. कौन सी two shapes? Main verb and the helping verb. सर एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसके अलावा. अभी नहीं नोट करते हैं थोड़ी देर में नोट. देखें, I have beaten him. सर मेन वर्ब किधर है? beaten जो एक स्टेट वर्ब है, एक्शन वर्ब है. एक्शन है सर. और हेल्पिंग वर्ब किधर है? ठीक है सर, ये रहा. तो सर हम कभी कभी ये भी करते हैं कि I have a car. Yeah, have is the main verb. There is no action verb in this sentence. So right now we have the tense which is present perfect, and right now we have the present simple again, right? So let's go a little further. So I do not teach. Where's the main verb? Teach. Teach. So where's the helping verb? Do. So I do that all the time. Where is the main verb? Do, sir. And there is no other verb in the sentence. Sir, ये दोनों कौन से हैं? Present simple, and this one is also present simple. Sir, आगे चल के ना थोड़ी और मुसीबतें आएंगी. ये देखें अभी देखिएगा. So you form of verb will tell you. If the verb is ing form, that is present continuous, but we'll later discuss that, right? Sir, तो कभी कभार ना और ज़्यादा मुसीबतें आएंगी. Sir, you are silly. Present simple, present continuous. Simple. Sir, are is the verb here. Now what about this one? Sir, which is the main verb? Being, and which is the helping verb? तो एक सेंटेंस में ये दोनों साथ में भी आ सकते हैं. ठीक है, तो परेशान नहीं होना उससे. सर इसका भी काम ऐसा करते हैं. सर, I have had a car for 2 years. Sir, where is the main verb? Main verb. कार कहाँ से? Had, sir. और ये है क्या? Helping verb, sir. ठीक है जी. इस टेंस को मैं क्या बोलूं? Present perfect, sir. Why do we call it present perfect? Because the main verb is in which form? Third form, sir. All right. यहाँ पे भी ये वाला काम करते हैं, sir. I did not do that. कौन सा tense? अच्छा, well, main verb. Do, sir. And this one is helping verb, sir. So this is which tense, sir? No. Simple. Thank you very much. Because we have did. We have did there. All right. So sir, अभी के लिए दो बातें. Verb is not just an action. It is an action or a state. दो रोल हमारे समझ में आ गए सर. 12 साल में बहुत कम लोगों को पता लगता है, लेकिन हमें अब पता है. That verb is an action or a state. एक बार. दूसरा में क्या समझ में आया सर? एक चीज होती है जो ये स्टेट वर्ब्स और एक्शन वर्ब्स की वजह से ना हमारे पास 3 एक तरह की वर्ब्स आती हैं
जो मेन वर्ब भी बन सकती हैं और हेल्पिंग वर्ब भी बन सकती हैं। वो कौन सी है सर, उनका क्या नाम है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। कौन सी 3 एग्जांपल्स हैं? बी, डू एंड हैव। वंस अगेन, बी, डू एंड हैव। यहां तक सब क्लियर है? जी जी जी। पास्ट परफेक्ट ही तब बनता है जब हम यूं करते हैं, क्या? हाँ जी, यू हैड अ क्वेश्चन। उधर ही ला रहा हूँ, उधर ही ला रहा हूँ, सबर रख यार, क्या टेंशन है तुझे? अच्छा जी, जब मैं बोलूँ ना सर बी, अच्छा सबसे पहले सर वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं? नहीं नहीं नहीं, फॉर्म्स, वो फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म जो बोलते हैं हम लोग, 3 फॉर्म्स होती हैं सर। ये भी चेंज करते हैं सर, वर्ब कैन हैव 8 फॉर्म्स मैक्सिमम। सही है सर, लेकिन खुशकिस्मती की बात है कि इंग्लिश में सिर्फ एक वर्ब ऐसी है जो करती है। ठीक है जी। सर यूजुअली verbs have 5 forms usually। ठीक है जी। यार इंग्लिश इज अ वेरी वेरी स्वीट वेरी सिंपल लैंग्वेज, तुम लोग को एहसास नहीं है अभी कसम से। मैं थोड़ी थोड़ी सी तुम लोग को जर्मन या फ्रेंच ग्रामर थोड़ी सी समझाने की कोई ना, पागल हो जाओगे तुम लोग यार। लेट मी एक्सप्लेन दैट, लेट मी एक्सप्लेन दैट। अच्छा जी, सुने 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 सर, एक वर्ब को लेके चलते हैं, हम करते हैं गो। ठीक है जी। पे अटेंशन गाइस, पे अटेंशन, परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। सर गो जो है वो हमारी क्या है? बेस फॉर्म, जिसको हम इन्फिनिटिव भी कहते हैं, जो हमें वोकैबुलरी में, डिक्शनरी में दिखती है। सही है सर। गो के बाद आता है वेंट, जिसको हम बोलते हैं सेकंड फॉर्म, और आज से हम इसको याद रखेंगे पास्ट फॉर्म की तरह। सर फिर ये बनता है गॉन, जिसको हम क्या कहते हैं? थर्ड फॉर्म, और आज से हम इसको याद रखेंगे पास्ट पार्टिसिपल की तरह। नाम भले याद ना हो यार, वर्ब याद रखना बस। सही है सर। इसके बाद आता है गोइंग, जिसको हम जेरेंट बाद में बोलेंगे, अभी हम इसको बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है जी। और सर रुके रुके, लेट मी एडजस्ट दैट। गो, then we have the past form which is went, so then we have past participle which is gone. After that we have present participle which is going, and now we are good to go. सर इसके बाद एक चीज आती है जिसको हम क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म, जिसको हम क्या कहते हैं? गोस। सर ये 5 शक्लें आपको वर्ब की दिखेंगी। ठीक है सर। एक और वर्ब के साथ यही काम करते हैं सर। बेस फॉर्म बनेगी बी, ठीक है। पास्ट फॉर्म बनेगा was एंड वर। सर पास्ट पार्टिसिपल बनेगा been, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा being, और प्रेजेंट फॉर्म बनेगी is, am, are। सर 3 4 5 6 7 8। So together this verb only has 8 forms, right? सर कौन सी वर्ब करती है जिसकी 8 फॉर्म्स होती हैं? सर कौन सी? बी वर्ब। तो जब भी आप कहीं लिखा हुआ पढ़ो कि बी वर्ब है, बी का मतलब पूरी 8 फॉर्म्स हो सकती हैं। सही है? ठीक है भाई, कवर हो गया ये वाली बात। चलें, पास हूं मैं फिर। चले सर, इसी वर्ब के साथ एक और वर्ब के साथ ही करते हैं सर। हमारे पास है हैव। पास्ट फॉर्म क्या बनाएंगे? हैड। यहां ये भी हैड, सिर्फ आईएनजी ऐड करना है। और ये क्या बनेगा सर? हैज। दैट्स इट, प्रीटी सिंपल, यू ऑलरेडी नो दैट। सर नोट दिस डाउन प्लीज।
Okay. I want a volunteer, someone who can read out loud. Do we have anyone? Right, you got this. And from the boy side, you raised your hand. Or you just okay, all right. So we'll go with the lady. Beta, what's your name? Atraba. Very nice name. What's the meaning? Atraba. Yes, yes. All right. अत्रबा से हम रिक्वेस्ट करते हैं गाइस के हम ये पढ़ेंगे. I'll bring that page back, but first we are reading this. I'll bring that page back. Don't worry. Atraba, over to you. Yeah, start from here. I paid me something. The farmer was the सर इन 3 सेंटेंस में जो हाईलाइटेड बोल्ड वर्ड्स हैं सर ये यूज हो रहे हैं किसकी एक स्टेट वर्ब की तरह. इन्हीं के मीनिंग को हम यहाँ पे देखें. आगे यहाँ से पढ़िएगा. So action verbs can be simple or continuous. State verbs usually cannot be continuous. क्योंकि अगर हम स्टेट वर्ब को ing में शिफ्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक्शन बन जाती है सर. जैसे listen to this one. I think Atraba is right. तो मैं कह रहा हूं everyone, मैं कह रहा हूं कि अत्रबा सही है. मुझे ऐसा लगता है कि अत्रबा सही है. There is no action involved in this. But when I say I'm thinking about going abroad, now I'm actually thinking about something. Now I'm doing an action in my mind. Yeah. तो जैसे ही एक स्टेट वर्ब आईएनजी में आती है क्या होता है उसके साथ वो एक्शन वर्ब बन जाती है सर. जैसे और कुछ स्टेट वर्ब्स को अगर हम आईएनजी में लाएं तो उनका मीनिंग ही बड़ा अजीब सा हो जाता है. फॉर एग्जांपल सर ये देखें सर वी हैव 3 cars बट ट्राई टू से वी आर हैविंग 3 cars. व्हाट्स द मीनिंग? वी आर ईटिंग 3 cars. वी डोंट वांट टू से दैट, राइट? मेरे बच्चों ये समझ आ रही है बात? सर हम आइंदा से वी आर हैविंग अ कार, वी आर हैविंग अ बिग हाउस, वी आर नॉट गोना से दैट. Right? We're having a party, it's fine. We're having lunch, it's fine. We're having tea, it's perfectly fine. जी, अत्रबा अगली बार पढ़ते हैं ये these examples. यहाँ से हाँ. What does that mean? Can anyone explain? हाँ लेकिन हम एक स्टेट वर्ब को जब आईएनजी में लेके आते हैं तो अगर वो स्टेट वर्ब बेस फॉर्म में रहती तो वो क्या दिखाती है? परमानेंट सिचुएशन या टेम्पररी सिचुएशन? परमानेंट सिचुएशन. यानी तुम अक्लमंद हो, तुम बेवकूफ हो, राइट? ये परमानेंट बात है. लेकिन जैसे ही हम उसको आईएनजी में लेके आते हैं सर इट शोज अ टेम्पररी सिचुएशन. तुम हो नहीं, तुम बन रहे हो. हाँ एग्जैक्टली, तुम हो नहीं, तुम बन रहे हो. ठीक है जी. अच्छा, इसके बाद सर ये वाली बात देखते हैं. यहां से पढ़िएगा. आई लाइक. सर कुछ वर्ब्स के साथ हम ये कर सकते हैं कि हम उसको आईएनजी में यूज कर लें. जैसे मैकडॉनल्ड्स ने किया सर. मैकडॉनल्ड्स ने कहा आई एम लविंग इट. यू रिमेंबर दैट सर? मतलब मुझे बाकी बर्गर्स इतने अच्छे नहीं लगते लेकिन ये वाले में कुछ अलग बात है. सो आई डोंट यूजुअली लाइक पार्टीज बट आई एम लविंग दिस वन. मतलब मुझे पार्टीज अच्छी नहीं लगती हैं लेकिन ये वाली का मजे कुछ और है सर, राइट? I don't usually like burgers, but this one is different. I'm loving it. तो हम उसको पर्टिकुलर सिचुएशन को बताने के लिए काम यूज कर सकते हैं सर. इस पूरी एक्सरसाइज में जो बात हमने देखी अभी तक कोई सवाल अगर नहीं है तो सर जल्दी से ये सॉल्व करना शुरू करें. सर हम सॉल्व करेंगे इसको ओरली. एक बंदे से पूछूंगा मैं सर. स्टार्टिंग विद यू. कुछ नेम? मुजम्मिल पहला क्वेश्चन एग्जांपल है. स्टार्ट जब भी हम करेंगे सर हम पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे. मुजम्मिल. टॉम. Tom is on the internet. He's telling people about himself, with verbs that express states and which express. ठीक है जी. पहला वाला एग्जांपल मैं सॉल्व कर देता हूँ सर. आई सर्व नेट द मोस्ट इवनिंग्स. तो ये डेफिनेटली एक एक्शन है. अगला वाला आपका मुजम्मिल. States. Moving on to the next person on your left, on your right. So yeah, keep them around moving.
स्टेट सर स्टेट। अच्छा जब हम गलती करेंगे सर वो सेंटेंस हम लिख लेंगे अपने पास। दैट्स अ कॉमन रूल ऑफ द क्लास। मैडम ओवर टू यू। I will do lots of participate actually. एक्शन है जी आगे। I will put the इट्स अ स्टेट। सर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी बारी है? आप बेटा यहाँ से हाँ। तो दो ऑप्शंस हैं, हमने एक सिलेक्ट कर लेना। व्हाट आर यू लुकिंग एट? यस पढ़ा है? नहीं ये तो एग्जाम्पल थी ना। Yeah, you'll have to solve this blank and then we're gonna leave you. All right. Which one is right? I think is right. So read the correct answer only. Over to you, Atrava. आगे चलते रहे। Sir, it didn't fit me properly. It didn't fit me properly. Moving on to the next person. Oh, I see. I'm seeing. Oh, I see. Oh, I see. And पढ़े जी। So you have tea or you're having tea? You're having tea here, and in this one again. in this. We're thinking about something very serious. बिल्कुल सही पकड़ा। We are thinking about something very serious. आगे पढ़े, आप ही पढ़े। I am coming from का मतलब मैं वहां से चलता हुआ आ रहा हूँ। I come from का मतलब मैं वहां से belong करता हूँ। ठीक है जी, जैसे हम बोलते हैं I come from Pakistan. So I come from। आगे ये लिखने में गलती की है ना आपने, जिसे इसने की है भाई वो लिखता है। I don't have to remind you every time. तुबा। Oh, that's nice. क्या नाम था आपका? सॉरी मैं भूल गया, क्या था? कोमल, सॉरी। चलो नेक्स्ट क्लास में सर if you are facing your trouble, get this book in the hard copy. It should be available at the bookshop. नहीं तो आप उर्दू बाजार से लेके आएंगे इसको। It is a book which is under 500 rupees, so that's not a big deal. So over to you. That's nice. And I got this fish look. It weighed about half a day. बिल्कुल सही है, keep going. पढ़े आप ही पढ़े। What a nice little boy and what a sentimental old thing you are. सही है जी। Sir, the verb be, next person. Put. मेरी जान पढ़ना। सर बी की कितनी फॉर्म्स होती हैं? 8। यहाँ पे हम सिर्फ प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट में कौन कौन सी आएगी? बी, इज, एम, आर। चलें जी, और बीइंग भी आ सकती है जी। पहले एग्जाम्पल पढ़ लें। मतलब सर डैनियल हेल्पफुल होता नहीं है, आज पता नहीं क्यों हो रहा है। तो ही इज बीइंग वेरी हेल्पफुल, राइट। आगे ये लिखा हुआ यार, ये फिल हुआ हुआ। आई एम टायर्ड, आई वांट टू गो होम। अब पढ़ रहे हैं सर आप। रुके let him solve that. चिल्ड्रन भाई सिंगुलर या प्लूरल? तो इज लगेगा, आर लगेगा। चलें आर तक हम आ गए, आप क्या करें? So once again your complete answer and a little louder. फिर से सेम आंसर को दोबारा पढ़ने, थोड़ा जोर से पढ़ना। आर बीइंग क्यों गाइस? बिकॉज वो यूजुअली है नहीं, आज बड़ा पोलाइट बिहेव करें, they usually don't behave so well. So the next person. कौन पढ़ रहा? हाथ उठाओ, जोर से पढ़ो यार। हाँ जोर से बोला था, तुम्हारी तो पहली वाली आवाज भी चली गई है जी। बोले। अच्छा व्हाट्स द आंसर? चले आंसर बता दें।
Was Nisa, she is ill. Write it down. So write down the sentence. Back to you, ladies. One with the red scarf, beta, what's your name? Hamna. Hamna, over to you. Of course, you can understand it. You are being stupid. That's all. तुम समझ सकते हो, तुम बस बन रहे हो. Note it down, Hamna. Next person, beta, what's your name? अरीबा पढ़ रही है जी. बिल्कुल सही है. We are interested in doing a course here. So over to you. What's your name? Hassan. Hassan, आप पढ़ रहे हैं जी. Lazy at the moment, she is done no work at all today. क्या करें? Vicky is पक्की permanent lazy है या आज हो रही है सिर्फ? Vicky is being very lazy at the moment, sir. Add it to your list. आगे बढ़ते हैं जी. सेकंड सेंटेंस को फिट करना है हमने एक जगह पे. आप कर रहे हैं जी. ऑप्शन है हमारे. यहाँ से पढ़ना शुरू करो बेटा. यहाँ से. पढ़ो. And I still got a chance to win. I used so much petrol. I played and अच्छा, ये है हमारे पास ऑप्शन. हमने देखना है पहला सेंटेंस, उसके हिसाब से इन ऑप्शंस में से एक चीज उठा के डाल देनी है. जैसे आई एंजॉय द गेम, आई प्लेड एवरी वीकेंड. मुझे अच्छी लगती है और मैं हर हफ्ते को खेलता हूँ, हर वीकेंड पे खेलता हूँ. आपकी बारी जी. I am enjoying the game. Nope. I've still got a chance to win this one. सही है जी. आपके पीछे वाली रो पे चलते हैं जी. The car won't get a lot of money. I never wanted. It's so expensive to buy. ठीक है जी. It's too expensive to buy. Perfectly done, sir. The car is costing. आपकी बारी. The car is costing a lot of money. It uses so much petrol. ठीक है. It uses so much petrol. I am liking my new job. Yeah. आपकी बारी सर. Yes. अरे यार कि सारे मतलब मैं यहाँ बिठाऊंगा अगली क्लास में जिसकी ऐसा वीक हो और वो पीछे बैठा हुआ हो. आपकी बारी सर. I like my job. I think it's going to be perfect. It's going to be perfect for me. And the last one. आप. हाँ आप. I like my job. एक ही ऑप्शन बचा यार अब तो. I never want to change it. ठीक है जी. चले. So रेगुलर टारगेट है हमारा राइटिंग का. राइट. आज की हमने क्लास में सीखा ग्रामर में क्या कि वर्ब इज एन एक्शन और अ स्टेट. 5 फॉर्म्स होती हैं. मैक्सिमम एज जा सकती हैं और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है. सर ये बुक जरा दिखा देंगे सबको ऐसे उठा के. बेटा ये देखो जेलस लोग ऐसी होती है बुक. ये इन लोग के पास है, इन लोग के पास है, 3 लोगों के पास, 4 लोगों के पास है, बाकियों के पास भी होनी चाहिए. सही है. सो गेट दिस बुक इन द नेक्स्ट क्लास. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट राइटिंग टॉपिक जी. बुक का नाम है जी ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर. द राइटर्स नेम इज जॉन ईस्टवुड. जॉन अलग है, ईस्टवुड अलग है. ना जाओ इस रास्ते पे. चलें. चलें जी. एवरीवन. अच्छा देखो, अगर कोई टॉपिक आपके पास ऐसा आ जाता है जो हमने नहीं किया हुआ, तो हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे एग्जाम में, छोड़ेंगे उसको या कुछ सोचेंगे उसके बारे में, इमेजिन करेंगे. तो सर अगर यहाँ पे भी कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है जो आपको नहीं पता है तो उसके बारे में कुछ लिखिएगा जरूर. सही है. So firstly, this is a very, very basic exercise and I want you to write answers to these questions, please. It can be one-liner, two-liner, something that you can make correctly. That's it. The correction is the key here. नहीं, correct and true में फर्क है.
You don't have to be true, you have to be correct grammatically. That's it. आप मुझे बोलेंगी ना मैं इंजीनियर हूं मैं मान लूंगा सही है चलें जी So I know it's very juvenile, very childish, but for the sake of the class. बल्कि इसको करो यार हम अपनी ना ड्रीम जॉब के बारे में लिखेंगे which should be other than चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्योंकि सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बारे में लिखेंगे I don't want that. And again, do not write the answers, do not write the questions, only write the answers. Naval, trouble? One sentence at least. देखो अगर तुम एक एग्जाम दे रहे हो इंग्लिश का टॉफल आइल्स इस तरह की कोई चीज दे रहे हो और तुमसे वो पूछते हैं व्हाट इज योर जॉब तुम बोलते हो डॉक्टर भाई तुमने इंग्लिश बोली कहाँ जिसको मैं जज करूं राइट डू यू गेट द पॉइंट हाँ एमसीक्यूज आते हैं बेटा 10 we'll talk about that in the upcoming classes हाँ पेपर पैटर्न देखेंगे हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में देख लेंगे इसी वीक में देख लेंगे Hamna Ariba, you will be the first person to speak about this. बात नहीं करो. And the minute you're done, raise your hand or just inform me in any way that you want to. Should I read the questions? All right, good job. Let me ask you then. All right. So tell us about your dream job. Don't look at the page now. Whatever you have written, you have in your mind, right? Just shoot. Go.
Yeah, whatever you wrote about. ठीक है, बताएं, शुरू करें. Hold on. First of all, guys, listen up. We're having a conversation. She's going to be she's going to be answering all of these questions. All right. So, first of all, madam, what's your name? And tell me something about yourself, first of all. Whatever you want to tell me. थोड़ा जोर से. और जोर से. She's a wildlife photographer. All right. So tell me about your job a little bit. ये सारे आंसर ना कवर करने की कोशिश कीजिएगा जब आप बोल रहे होंगे. जी. Yeah, I capture. Okay. देखिए आपने कितने सवाल हैं, कम से कम 10 हैं. 10 questions, right? If you're summarizing all of those 10 questions into a single sentence, that's not a job well done. In fact, हर क्वेश्चन के आंसर में आप अगर why लगा देंगे ना, थोड़ा सा और आंसर आपका स्ट्रेच होगा. Right? For example, what is your job? I'm a photographer. I like this job because it gives me pleasure. I can connect with the nature. बात करें. सही है? So, why not? Let's go. Suppose these are there with you. Just take a look at them and answer those questions. I'm an engineer. I work at usually named district leader. I chose this job because it's a great job. This job is not much popular because of its field, because it's environmental engineering, so it isn't popular among people. Yeah, my colleagues are very friendly, not me exactly, but yeah. It was just boring day. First, when I can say that started the job, or it was my first day. It was boring, but yeah, I learned something good. I have such responsibility that my work on my side. I can say that like to control the machinery. It's part of my job. Yeah, I really like it. And I think so that I'm not choosing it for the future. Maybe I can switch something else. And that's it. That's perfectly fine. So round of applause on him, please. And for her for trying. That's very good. All right. So what we are gonna do in the next class, इसका ना एक छोटा सा ना अपने दिमाग में लिखिएगा नहीं. It should not be a paragraph in writing, but in your mind it should be a paragraph, right? And when we come in the next class, I want you to be ready with this topic. ठीक है? एक दफा लिख लें, लेकिन उसके साथ आप ना माइंड में उसका एक पिक्चर भी बना के रखिएगा. ठीक है? That's all for today, guys. Thank you so much. ले लें, बिल्कुल लें. ठीक है जी. That's it for today, guys. Thank you so much for your time.